हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डोमेनिया। तो थंबनेल एंड टाइटल से आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है या फिर मैं कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को मैं 3 सेक्शन में रखूंगा। पहला मैं बताऊंगा वो 2 फैंग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से थे। दूसरे सेक्शन में होगा कि मैं बताऊंगा कि वो कौन सा पोस्ट था जिसमें मैं कंप्लीट अपने ईमेल वगैरह को दिखाऊंगा कि वो ईमेल वगैरह कैसे आया था, क्या क्या चीजें उसमें थी। और तीसरे सेक्शन में मैं अपने रिज्यूमे को दिखाऊंगा जो इस 2 फैंग ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्टलिस्ट हुई थी। इसके बाद मैं अपने रिज्यूमे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि सेक्शन वाइज में एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सी चीजें आप किस मैनर में डाल सकते हो। तो कंप्लीट वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसके बाद वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर है। पहला, ऐसा नहीं है कि जब ये रिज्यूमे आप बनाओगे तो पहले दिन से ही आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने लगेंगे ऑर्गेनाइजेशंस में। ऐसा नहीं है, क्योंकि आई ऑलरेडी अप्लाइड मोर देन 10 एंड 15 कंपनीज विद रेफरल्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिजेक्ट हो गया। बट जब ये सेलेक्ट हुआ तो 2 बिग जो सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिनका सबसे बड़ा नाम है आईटी इंडस्ट्री में, उसमें ये सेलेक्ट हुआ। तो जैसे जैसे आप अपने रिज्यूमे को अपडेट करते जाओगे अपने हिसाब से, तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वो सेलेक्ट हो जाए। इसके अलावा कंप्लीट फॉर्मेट में दिखाने वाला हूं, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात ही बताने वाला हूं जो रिज्यूमे बनाते टाइम आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करो। और यदि आपको लगे ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। इसके अलावा एक और बात, यदि वीडियो देखने के बाद आपको अपने रिज्यूमे बनाने में कोई दिक्कत आ रहा हो, यदि आप चाहते हो कि ये रिज्यूमे बिल्डिंग सेशन का मैं एक अलग वीडियो बनाऊं या फिर एक लाइव सेशन बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मैं एक कंप्लीट अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूं जिसमें मैं बताऊंगा हाउ यू कैन मेक अ प्रोफेशनल रिज्यूमे फॉर फैंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके अलावा एक और बात, जो मैं ये अभी पोस्ट बताने वाला हूँ ये एचडी प्रोफाइल नहीं है। तो हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्शन होता है कि यदि हम लोग सिर्फ डाटा स्टोरेज एल्गोरिथम करते हैं तो ही हम लोग फैंग ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटी हैं जिससे आप इन सभी बिग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Okay everyone, so as I said, my resume got shortlisted for 2 FANG company, means Amazon and Google. So first I'll show you what is the post that I have applied and my resume got shortlisted. Then at the end I'll show you what is my actual resume is and how you can prepare for this. And maybe if I don't get time, or maybe I feel this video is long, then I'll not tell you how can you make this, but I'll show you my actual resume. You can make it. And if you comment down below, then I'll make a separate video how you can make a resume like I have made and it got shortlisted for Amazon and Google. Okay, so first I'll show you the Google invitation that my resume got shortlisted. So now you can see behind me. So this is the Google Online Challenge. You are invited. So ये टाइटल था. So here you can see Google's online challenge team and here is the Google email ID. So this is the code for everyone. So here you can see, hi Vikas Kumar, thank you for interest in cloud technical support team in Google India. So I applied for the cloud technical solution team and for this you can see, as the next step we would like to invite you to participate in Google's online challenge. So here they told they spoke about something, what is this assessment and how long it takes time. So this is a 30-minute online challenge, will help you to gain an understanding of your skill set and will provide you the insight of the Google hiring process. So here they tell how does it works. These are some, when for this, if I want to continue with this recruitment drive, then I need to register here. So this is a key that was valid for only for one. So when it go live, what will happen next, everything it is in this way. So I was the part of this Google of campus hiring challenge for the cloud technical solution team. So this is the first time my resume got shortlisted for the Google. Okay. Second, this is for the Amazon. This is for AWS Premium Support. So this is the invitation from the AWS Premium Support assessment. So here I got 7 days of time from at that day I got this email. From that day I got 7 days I can take this assessment, and to start with the assessment I can
This is the link. I just need to click on this and I can start. So this is Hello Vikas. Thank you for the interest in working the Amazon Web Service in AWS. Together we are building the future and our innovation project, service in ID at a time. Okay. And we are excited to move you forward to the next step of the application process. Means whatever application I applied for the particular role, my application is now going to be second steps, that is online assessment, and which will approximately 80 to 100 minutes long. So these are the two pen company in which I have applied already and my resume got shortlisted. So it's very great feelings when your resume, because from a tier 2 college now your resume is getting shortlisted in FANG organization, then definitely it feels something special, definitely. So now I'll show you what is my actual resume is. Okay, now I open my resume. So here you can see this is the complete format. Here you can see the complete my resume format, or my one-page resume that I have made and applied with this resume for all the companies, and it got shortlisted. So if I define briefly, I'll not take so much of time. So here I just keep my small address, my name, my LinkedIn ID. Here is my number and my email ID. Okay. Second section is the experience section, where I have put my most recent and most valuable experience. Then my technical skills. So here I have put cloud computing, DevOps, Linux, everything. Other skills: programming, core concept and management. Then the project completed, that I have done my project in my college days, in my final year project, industry project. So I have taken three main important projects that I am more confident about. And here is my educational background. So this is the complete format. I did not take any resume builder. This is my own and it got selected. So if you want to know how I made this and what is the things, or you want a complete video on this resume making session, then definitely comment below. I will love to make the video on this. So ये था कि मेरा कौन सा रिज्यूमे गूगल और अमेज़ॉन में सेलेक्ट हुआ था। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा अच्छी लगी होगी। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप चाहते हो कि मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊं हाउ टू मेक रिज्यूमे और रिज्यूमे बिल्डिंग सेशन, अगर मैं एक वीडियो बनाऊं या फिर एक लाइव सेशन लूँ, तो प्लीज़ कमेंट कर देना नीचे। और चलो आप लोग यहाँ पे लाइक से सब्सक्राइब आप कर ही दोगे आई बिलीव, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ वो कर देना। एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।